डबल मर्डर केस के फैसले पर केरल के विपक्षी नेता और कांग्रेस नेता बीडी सतीशान ने कहा, हम पेरियर डबल मर्डर केस में सीबीआई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। यह सीपीएम द्वारा किया गया था। सीपीएम नेताओं का इनमें साजिश में शामिल होना सामने आया है। मृतक के परिवार ने कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हम अभी भी अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों को बरी किया गया है। परिवार इसके खिलाफ अपील करने का योजना बना रही है। केरल कांग्रेस परिवार का समर्थन करेगा। We are welcoming the decision taken by the judgment delivered by the Honorable CBI Court in Cochin regarding the double murder in Periyar. This was done by the CPM. CPM leaders were in the conspiracy, criminals conspiracy. They assigned the culprits commit murder, and they helped the accused persons. That is why the family of the deceased person approached the Honorable Court, and Honorable Court issued an order for a CBI investigation. So CBI completed their report, and trial has been run. Now they proved that the court delivered that these are all the persons they committed. We are waiting for the final judgment also, and some of the persons were acquitted. So the family is interested to move appeal. Party Indian National Congress in Kerala will support the family. This is a family, and this is a victory of the family of the deceased and the Indian National Party in Kerala.